Good evening everyone, welcome to EduTap and welcome to another important daily current affairs session in which we cover the important general awareness and economic and social issues current affairs from examination point of view. My dear friends, I hope that all of you are really preparing well for your upcoming examinations, and we all know that the season of exam is on. 2 days back we saw the RBI Grade B officer exam notification coming out. Today IFSCA exam notification has come out. So basically it is really the high time that you should start preparing for your upcoming examinations. And yes, seriously guys, it's really a very important part क्योंकि जितनी जल्दी आप अपनी pace को increase करेंगे, you will be having more amount of time for the revision purposes as well, right? So again guys, welcome to EduTap, and in this session we will be covering important current affairs from 6th to 10th of September 2025. If I'm audible and visible to all of you, please give me a thumbs up in the chat box. So hi Deepak, Harshal, Gururaj, Mayank, Grover, Meher and all other people who have joined us live in this session. So my dear friends, before starting the session, I would like to tell you that we conduct these sessions in the three important stages. First, we revise. First, we basically try to test that whether you have retained all the important information of the previous session or not. And then we move on to the current affair of the given date, and then we follow it by solving the MCQs, right? So yes, everything is good. We are good to go here. So guys, before starting the session, these are the current affair initiatives that we at EduTap are taking for all of you. Like here, the first one is the government scheme session, where we cover all the important aspect of a particular scheme that we are picking in that session. And scheme is a very, we can say that a big pain point of all the aspirants, right? So that's why we conduct these sessions every Monday, Wednesday and Friday at 10:30 a.m. so that all your pain points got resolved. Okay. After that, we are having a Perspective 360 series session for your descriptive writing. And we conduct these sessions every Monday, Wednesday, Friday at 5 p.m. And as you're preparing for the regulatory bodies examinations like RBI Grade B officer exam, so guys, definitely the finance current affairs and RBI notifications are very important, which we conduct in Finance 360 series session, which has been conducted every Tuesday, Thursday and Saturday at 10 a.m. And then the last but not the least, your City 360 series session. So basically we conduct this every Tuesday, Thursday, Saturday at 5 p.m. that you are presently watching, where we cover important general awareness and economic and social issues current affairs. My dear friends, please spread out the word about the sessions, because it is very important that अगर आप अपने friends को भी aware कराएंगे about these sessions, definitely they can also get the most out of these sessions. Okay? So कौन कौन रिविजन करके आया आज के सेशन में, मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर दोस्तों. सो रिवीजन किस किसने की है आज के सेशन की, जल्दी बताइए चैट बॉक्स के अंदर. सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर कमिंग विद द फुल रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट? जब भी नए सेशन में आए, पुराने सेशन को अच्छे से याद करके आए. तो चलो शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट हियर इज ऑल द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स. तो यहाँ पर दोस्तों आज से पहला टॉपिक है आपका जो फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स आर ओनली रेलिवेंट फॉर योर फेज 1 एग्जाम. तो आज हमारे पास जनरल अवेयरनेस की ज्यादा न्यूज आर्टिकल्स है एज कंपेयर टू द इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, बट अगेन it is going to be very useful for your phase 1 exam. Guys, your exam is on the 18th of October, right? So 18 अक्टूबर के अगर आप डेट को देखेंगे तो ये जो सितंबर का करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए. So Mayank, Harshal, Gururaj all are saying that yes, we have revised it. Let's test it now. So here is the very first question for all of you of this quick bite revision of the today's session. So पहला question आप सभी के सामने, please tell me the name of ministry which has jointly launched the guidelines for co-location of Anganwadi centers with schools along with the Ministry of Women and Child Development. This is the first question to all of you. Please tell me the name of the ministry. Which ministry has basically along with the Women and Child Development Ministry has come up with the co-location guideline for the Anganwadi centers. जहां पर हमने कवर किया था कि स्कूल प्रीमिसेस के पास ही आपके आंगनवाड़ी सेंटर्स को ओपन करना चाहिए. Absolutely right, it is Ministry of Education. Ministry of Education is the right answer. Now the next question. So it is going to ensure school readiness and smooth transition of children from Anganwadi centers to which grade? It's grade 10, grade 12, grade 6, grade 1. What exactly that grade is? It is still grade 1. Absolutely right. I can see in the chat box Harshal, Gururaj, Akshat, Mayank, Padmini, Meher, Sijagu, Shanika, everybody has given the right answer. Well done guys. बढ़ते हैं next question की तरफ. So Prime Minister Modi ji participated in the 25th meeting of SCO, right? So this meeting was held in which country? The meeting was held in Tianjin, China.
Tianjin, China, right? And during this summit, which country was been accepted as a new partner country of SCO? तो SCO के नई पार्टनर कंट्री कौन सी कंट्री बनी है? That is Laos. Laos is the right answer. Next question. The chairmanship for 2025-2026 has been passed out to which country? किस कंट्री को चेयरमैनशिप मिली है for the next year? What is the name of that country? It's Kyrgyz Republic. Kyrgyz Republic is the right answer. Moving to the next part. So GST Council की recently 56 meet हुई थी and during that they tried to bring up some next generation reforms, right? So here you have to tell me that what exactly is the restructuring which has been done. We all know that earlier there was four slab tax structure of GST. That was 5%, 12%, 18% and 28%. So which two slabs are the part of this new system? That is 5% and 18%. And it will be there along with the special tax of 40% which is applicable on sin goods. And I can see in the chat box, yes, everybody has given the right answer. Next question. Which portal has been launched by Union Housing and Urban Affairs Minister during 5th meeting of the Central Advisory Council? Under this portal, what we are doing? We are basically unifying all the database of the RERA authorities of the different states. So what is the name of this portal? The name of the portal is Unified RERA Portal. Unified RERA Portal. That is the right answer. Next question. Ministry of Home Affairs ने issue किया है notification easing stay norms. So we covered this part कि easing of the stay norms guidelines have been launched by the Ministry of Home Affairs, जहां पर 3 countries के जो persecuted minorities हैं, they are allowed to stay in our country without any penalty or any fine. What exactly are the name of these 3 countries? Let's see who will give me the right answer to this question. The name of these 3 countries are Pakistan, Afghanistan and Bangladesh, right? Pakistan, Afghanistan and Bangladesh is the right answer. Next question. 65th Foundation Day of NCERT was being commemorated on which date? 65th Foundation Day कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया गया था? It was celebrated on 1st of September. 1st September. Next question. So what exactly is the name of the app which has been launched to facilitate seamless procurement of cotton from the farmers in our country? तो हमारे देश के फार्मर से कॉटन को प्रोक्योर करने के लिए एक ऐप का लॉन्च किया गया. व्हाट इज इट्स नेम? इट्स कपस किसान ऐप. कपस किसान ऐप. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इंडिया सेलिब्रेटेड द नेशनल न्यूट्रिशन वीक. सो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन वीक which is being celebrated in our country? What exactly it is? It is 1st to 7th of September. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया का पहला वर्चुअल कंजर्वेशन पोर्टल कहां पर लॉन्च हुआ है? इन विच स्टेट इट हैज बीन लॉन्च्ड? इट हैज बीन लॉन्च्ड इन असम. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 को कंडक्ट किया रिसेंटली एंड इट वाज कंडक्टेड इन द कामेंग रीजन ऑफ विच इंडियन स्टेट? कौन सी इंडियन स्टेट के कामेंग रीजन के अंदर इसको कंडक्ट किया गया था? वी आर टॉकिंग अबाउट युद्ध कौशल 3.0. इट वाज कंडक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश. Arunachal Pradesh is the right answer. So I can see here that most of the people have given me the right answer, guys. Before moving on to the today's session, I would like to ask you, are you guys really getting the benefit of the revision part that we are conducting for all of you before the starting of the session? क्या आप सभी को इस revision test से कुछ फायदा मिल रहा है? Are you guys able to retain the information from examination point of view? Right? Because in the upcoming timeline, the most important part for all of you is the revision, right? So preparation बहुत लोग करेंगे, बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ के जाएंगे पेपर के अंदर, but एग्जाम के अंदर वही स्टूडेंट अच्छे से आंसर कर पाएगा जिसने अच्छे से रिविजन की होगी इस करंट अफेयर्स की, right? So current affairs plays a very, very important role and here the revision is the key to the current affairs. So I can see here everybody is basically saying yes sir, that it is impacting and it is benefiting a lot. Thank you guys. So let's move ahead. So इसी तरीके से अपनी रिवीजन को करते रहिए, ठीक है? And I will also keep on taking your revision tests here. बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज आर्टिकल की तरफ, दैट इज आदि संस्कृति. आदि संस्कृति को किसने लॉन्च किया दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है बीटा वर्जन ऑफ आदि संस्कृति. So we all know that national conference is going on recently on the
Adi Karma Yogi Abhiyan, right? So during this, a beta version of Adi Sanskriti has been launched by the Ministry of Tribal Affairs. तो Ministry of Tribal Affairs ने लॉन्च किया है along with the State Tribal Research Institutes, और ये वर्ल्ड की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है फॉर द ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स। दोस्तों हमारे जो ट्राइबल पीपल हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके पास बहुत ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, राइट? तो उन सब की यूनिवर्सिटी हम एक तरीके से बना रहे हैं, एंड दिस इज अ डिजिटल यूनिवर्सिटी फॉर ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स। इसके अंदर क्या किया जाएगा? वी आर बेसिकली गोइंग टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशंस। यू कैन सी हियर it aims to preserve tribal heritage, promote traditional knowledge and enable livelihoods for tribal communities. तो दोस्तों क्या किया जाएगा? ट्राइबल हेरिटेज को प्रिजर्व करेंगे, उसे प्रमोट करेंगे और उनके लाइवलीहुड को भी हाँ इससे इंपैक्ट मिलेगा, राइट? सो दैट्स हाउ वेयर वी हैव सीन द आदि संस्कृति। अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों आदि संस्कृति की, इट इज फर्दर हैविंग 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट कंपोनेंट हियर इज आदि विश्वविद्यालय, दैट इज डिजिटल ट्राइबल आर्ट एकेडमी। तो ये बेसिकली कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे ऑन द डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन लाइक ट्राइबल डांस, पेंटिंग, क्राफ्ट्स, म्यूजिक एंड फोकलोर। देन वी हैव आदि संपदा विच इज अ सोशियो कल्चरल रिपोजिटरी। दोस्तों रिपोजिटरी क्या होता है? इट इज अ बैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, राइट? So host curated documents under 5 themes like painting, dance, clothing and textile artifacts. तो दोस्तों हमने बताया कि यूनिवर्सिटी जहां पर प्रिजर्व किया जाएगा उनके हेरिटेज को, कैसे किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो इट इज द बैंक ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट वी कॉल द रिपोजिटरी, राइट? नाउ द थर्ड वन इज आदि हाट, दैट इज ऑनलाइन मार्केट प्लेस। सो इसको इनिशियली लिंक किया जाएगा ट्राइफेड के साथ, दैट इज अ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड इट इज गोइंग टू have a dedicated e-commerce portal for the tribal artisans. दोस्तों आप सभी e-commerce portals को देखते हैं लाइक Amazon, Flipkart, काफी लोग आप में से अपकमिंग सेल की वेट कर रहे होंगे, राइट? बट लेट मी टेल यू हियर, क्यों ना हम अपने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए भी एक ऐसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर उनके प्रोडक्ट्स को विजिबिलिटी मिले और उनको वहां पर सेल करने का मौका मिले, राइट? सो दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू basically play on here. So Adi Hart, Adi Vishwavidyalaya, Adi Sampada, जिसके जरिए we will be able to preserve, promote and enhance the livelihood opportunities for the tribal population of our country. So beta version launch किए Adi Sanskriti. So please tell me in the chat box what exactly is the name of this ministry which has come up with the beta version of the Adi Sanskriti, which was being launched during the National Conference on Adi Karma Yogi Abhiyan. What is the name of this ministry? The name of the ministry is Ministry of Tribal Affairs, right? इसके अलावा दोस्तों recently we conducted a session and I told you that the beta version of an initiative was being launched by the Ministry of Tribal Affairs. I want you to tell me the name of the initiative in the chat box. The name of the initiative is basically, it is a translator tool. It is a translator tool which uses the artificial intelligence for the translation of the tribal languages into English and Hindi, or translating English and Hindi into the tribal languages. What exactly is the name of that particular initiative? देखिए दोस्तों ये initiative का नाम आपको याद करना जरूरी है। अभी हमने पढ़ा आदि संस्कृति, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? संस्कृति को प्रिजर्व कर रहे हैं, राइट? अगर हम बात करते हैं इस इनिशिएटिव की, तो लैंग्वेज बोली जाती है दोस्तों, वाणी के थ्रू निकलती है, राइट? थ्रू द वॉइस। सो बेसिकली इट इज आदि वाणी. That is the name of this initiative which has been recently launched by the Ministry of Tribal Affairs. Absolutely right. Akshat, Napoleon, Mayank, Shanika, Rover, Gururaj, Harshal, everybody has given the right answer. बढ़ते अपने नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ दोस्तों. सो 48th एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई रिसेंटली ऑन द ओशंस लॉ एंड पॉलिसी, and this was held in New Delhi. So 48th, this conference was being held in New Delhi, and for the very first time in the last 5 decades of this institution, the conference has been hosted by India. तो पहली बार ये इंडिया के अंदर हुई है, and that is why it is very important to be covered. तो कहां पर हुई? न्यू दिल्ली के अंदर हुई. What was the theme? The theme was developing world approaches to ocean governance, perspectives from the Indian Ocean Rim. So basically दोस्तों यहाँ पर it was a kind of gathering where all the stakeholders were present there and they deliberated on the different topics related to the maritime protection as well as the security and sustainable development, right? So that's where you can see here that the theme is developing world approaches
to ocean governance perspective from the Indian Ocean Rim. इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय स्टॉकटन सेंटर फॉर इंटरनेशनल लॉ, गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. सो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो 48th कॉन्फ्रेंस हुई है. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया हैज conducted this conference in New Delhi. That is the most important highlighted part here. Next part, HUID based hallmarking for silver. So दोस्तों आप सभी ने देखा हो कि पहले हॉलमार्किंग होती थी आपकी गोल्ड ऑर्नामेंट्स के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर, राइट. सो बेसिकली ये जो मार्किंग होती है, लाइक आपने काफी बार ऐसी मार्किंग देखी होगी दोस्तों, राइट. सो इस मार्किंग के जरिए हमें कुछ काफी डिटेल्स पता चलती है कि क्या प्योरिटी लेवल है उस मेटल का, जिससे उस पर्टिकुलर आर्टिकल को बनाया गया है. ओके, सो इट वाज अर्लियर यूज्ड फॉर द गोल्ड, बट नाउ later on it was also been released by the BIS for the silver items as well. So recently what the government has done, so voluntary hallmarking, unique identification based hallmarking for silver jewelry and articles has been implemented. दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अराउंड 2005 के अंदर सिल्वर आर्टिकल्स पर इसको शुरू किया गया था, राइट. सो दैट द परचेजर कैन आइडेंटिफाई दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द प्योरिटी लेवल ऑफ दैट मेटल. तो इस दौरान इसको लॉन्च किया गया, उसके बाद फर्दर अपडेट्स किए गए, राइट. सो अगर अभी बात करते हैं तो देयर वाज अ IS कोड दैट वाज 2112 व्हिच इज एप्लीकेबल, व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2014. और अभी ये जो HUID हॉलमार्किंग लॉन्च की गई है, इसके अंदर इस 2014 वाले कोड को रिप्लेस किया है फॉर द 2025 स्टैंडर्ड्स. ठीक है, तो इन स्टैंडर्ड्स को अपडेट किया जाता है दोस्तों. एंड नाउ द न्यू स्टैंडर्ड हैज बीन अडॉप्टेड व्हिच इंक्लूड्स द HUID बेस्ड हॉलमार्किंग. तो HUID का फुल फॉर्म याद रखिए, वॉलंटरी हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन. इसका पर्पस क्या है? सो दैट वी आर गोइंग टू एम्पावर द कंज्यूमर्स, द पीपल हु आर परचेजिंग दीज सिल्वर आर्टिकल्स to verify the purity of silver jewelry and articles. तो वो वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों, राइट. ये कब बना था, क्या इसका प्योरिटी लेवल है, एवरीथिंग दे कैन बी एबल टू वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ दिस कोड. द हॉलमार्क बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, दैट इज द स्टैंडर्ड मार्क विद द वर्ड सिल्वर, देन उसका प्योरिटी ग्रेड, उसके बाद उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड. तो ये 3 चीजें इसका पार्ट होंगी. HUID कोड को सिल्वर आइटम्स के लिए लॉन्च किया गया. IS 21122014 को रिप्लेस किया विद 2025, राइट. इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होंगे. पहला होगा एक हॉलमार्क होगा, सेकंड वन इज प्योरिटी का ग्रेड होगा, थर्ड वन इज HUID कोड उसके साथ अटैच्ड होगा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट माय डियर फ्रेंड, दैट किस डेट से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा. सो इट विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1st of September 2025, बट ऑन अ वॉलंटरी बेसिस. It is not mandatory, it is only voluntary, right? Next news article is Patent Mitra Initiative. दोस्तों पेटेंट मित्र इनिशिएटिव को 2025 के अंदर लॉन्च किया गया. ये इनिशिएटिव है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, जिसके अंदर जो भी नई इनोवेशंस होती हैं हमारी मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, तो उसका लाइसेंस इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है, राइट. दैट्स व्हाट इज द पेटेंट मित्र इनिशिएटिव. पेटेंट का मित्र बना दिया, ठीक है. सो इट वाज गाइडेड बाय नीति आयोग और उसको डेवलप किया गया था इस इनिशिएटिव को फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड DPIIT. एम काफी सिंपल है दोस्तों, वी वांटेड टू स्ट्रीमलाइन द पेटेंटिंग प्रोसेस. सबसे पहले कोई नया इनोवेशन हुआ, उसको पेटेंट कराया जाएगा, तो उसका जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा. ज्यादा कंबरसम प्रोसेस होगा तो बेसिकली पीपल वोंट बी एबल टू अचीव दैट पेटेंट, राइट. सो we wanted to streamline the patenting process. We wanted to strengthen intellectual property support and accelerate transfer of publicly funded innovations. तो यहां पर क्या गया दोस्तों, ट्रांसफर किया गया है पब्लिकली फंडेड इनोवेशंस का. अब ये न्यूज के अंदर क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ड्यूरिंग वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस ICMR ने 9 कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को अपने इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को दिया है. सो दैट मींस ये जो टेक्नोलॉजी है इसका लाइसेंस इन पार्टनर्स को दिया है सो दैट दे कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी. And that is why it was there in the news. And all of this thing has been done under the Patent Mitra initiative. So guys, if I ask you that what exactly is the name of the initiative under which ICMR basically provides a license to its industrial partners to use the new innovations which are basically created in the health infrastructure of our country. What is the name of that initiative? The name of the initiative is Patent Mitra initiative. And किसका ये इनिशिएटिव है? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ
It is an initiative of ICMR, Indian Council for Medical Research. Absolutely right. So these are the important part that we need to retain from here. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पर, दैट इज संभव. तो दोस्तों संभव, सबसे पहले जब भी ऐसा कोई एक्रोनिम आएगा उसका फुल फॉर्म याद करना बहुत जरूरी है. अब संभव स्टैंड्स फॉर सिक्योर आर्मी मोबाइल्स भारत वर्जन. सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन. दोस्तों इसके नाम से पता चलता है कि हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं, जो डिफेंस पर्सनल्स हैं, तो उनको ऐसा कोई डिवाइस दिया गया है जहां पर ये संभव नाम का एक पर्टिकुलर वी कैन से सिक्योर सिस्टम उसके अंदर इंटीग्रेटेड है. आप देख सकते हैं कि मोबाइल फोन है दोस्तों जिसके ऊपर ये संभव एक्टिवेटेड है. ठीक है, तो ये है क्या बेसिकली. लेट मी टेल यू हियर दैट रिसेंटली वन ऑफ द डिफेंस पर्सनल, डिफेंस हेड ऑफ आवर नेशन, ही हैज अनाउंस्ड दैट ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर. गाइज आई होप दैट आप सभी को याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में. इट वाज अ रिटेलिएटरी एक्शन व्हिच वाज बीइंग टेकन बाय द Indian Armed Forces against the attack in the Pahalgam, right? Against the attack on the tourists in the Pahalgam. So we all know that Operation Sindoor was conducted by Indian Army, right? So during this particular part, जो भी communication था आर्मी पर्सनल्स का, it was only through this संभव. So उन्होंने क्या किया दोस्तों, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, we use WhatsApp, Telegram and other channels for communicating. So they just avoided these kind of channels and they only followed these संभव phones. इन संभव डिवाइसेस को उन्होंने यूज किया. वहां पे कमांड ने जो भी उनको डायरेक्शंस दिए उसको उन्होंने रेप्लिकेट किया. तो एवरीथिंग वाज डन थ्रू दिस संभव डिवाइसेस, राइट. सो इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस सिक्योर मोबाइल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म संभव was used by Indian Army during Operation Sindoor for secure command level communication. इस सिक्योर कमांड लेवल कम्युनिकेशन के लिए संभव का इस्तेमाल किया गया. इट इज डेवलप्ड फॉर द इंडियन आर्मी अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव. तो ये इंडिजिनस है दोस्तों, फुली इंडिजिनस है. एंड नाउ दे आर आल्सो थिंकिंग ऑफ अपग्रेडिंग दिस संभव सिस्टम. सो प्लीज रिटेन द नेम संभव एंड व्हाट एग्जैक्टली इट्स फुल फॉर्म. इट स्टैंड्स फॉर सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, राइट. आई बिलीव सबको याद रहेगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ. अ स्पेस सिटी इन तिरुपति. So guys, government of Andhra Pradesh has signed an MOU and partnered with a Skyroot Aerospace organization, and these together they are going to create a space city in Tirupati, right? And the aim is very clear that with the help of this particular space city, they will be launching the private satellites from that particular space city. Now, my dear friends, what we have to retain here, the name of the state which has signed this MOU with the कंपनी. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? स्काईरूट एरोस्पेस. तो स्काईरूट एरोस्पेस के साथ ये सेटअप करेंगे. क्या सेटअप करेंगे? स्पेस सिटी. कहां सेटअप करेंगे? तिरुपति के अंदर. कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है. ठीक है. सो टू लॉन्च प्राइवेट सैटेलाइट्स. इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने यह भी कहा है कि हम 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स को क्रिएट करेंगे इन आंध्र प्रदेश, राइट. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस न्यूज आर्टिकल. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद विच Andhra Pradesh government is going to set up the space city in Tirupati in order to launch the private satellites. What is the name? Please tell me in the chat box what is the name of this particular company. The name of the company is Skyroot Aerospace. Skyroot Aerospace is the right answer. Next news article, CP Radhakrishnan, my dear friends. So NDA candidate CP Radhakrishnan has basically become the new vice president of our nation. So we all know that recently, just 2 days back, there was an election, right, for the vice presidential part for our country. We all know that sometime back, Jagdeep Dhankar ji resigned as the vice president of our nation, and now finally after the election, we have found the new vice president of the country. Please remember the name CP Radhakrishnan. CP Radhakrishnan के against अगर हम बात करें, so there was a judge. The name of the person is B Sudarshan Reddy. ठीक है. सो इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट थे बी सुदर्शन रेड्डी और एनडीए कैंडिडेट थे सीपी राधाकृष्णन. तो यहां पर ज्यादा डिटेल्स के अंदर नहीं जाएंगे दोस्तों, बस ये याद रखिए सीपी राधाकृष्णन इज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट. अगर इनके बारे में बात की जाए तो ही हैज ऑलरेडी सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द कोयर बोर्ड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी एंड महाराष्ट्र. तो पहले काफी स्टेट्स के गवर्नर रह चुके हैं, एंड नाउ ही विल बी टेकिंग ओवर एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर नेशन. That's all from here. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पर. सो जोनास गार स्टोर हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे. दोस्तों अभी हम बात करेंगे कुछ अपॉइंटमेंट्स की.
कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जब भी किसी कंट्री के हेड चेंज होते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड चेंज होते हैं, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, because we see such kind of questions being asked in the exam. Okay, so appointments की बात करेंगे. सबसे पहले है नॉर्वे के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं. So re-elect हुए हैं प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है जोनास गार स्टोर, राइट. इसके बाद आती है बात नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्रांस. So Sébastien Lecornu has been appointed as the new prime minister of France and he has replaced Francois Bayrou, right. इसके अलावा दोस्तों गुयाना के प्रेसिडेंट बने हैं इरफान अली. इरफान अली हैज बीन री-इलेक्टेड फॉर द सेकंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना. तो याद रखिए गुयाना के प्रेसिडेंट कौन है? इरफान अली. सेबेस्टियन लेकॉर्नु हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस एंड जोनास गार स्टोर हैज बेसिकली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे. So please remember the name of these three people. It can be asked in the upcoming questions, right? बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर. सो शिगेरू इशिबा. गाइस अभी हमने बात की अपॉइंटमेंट्स की, कौन कौन इलेक्ट हुआ, बट देयर इज अ पर्सन अमिड दिस हु हैज बेसिकली रिजाइंड. व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? शिगेरू इशिबा. ही वाज सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान. तो जापान के प्राइम मिनिस्टर ने अब यहां पर रिजाइन कर दिया है एंड द नेम ऑफ द पर्सन इज शिगेरू इशिबा. प्लीज रिमेंबर द नेम. और अभी हाल ही में जो नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उसका नाम भी हम कवर करेंगे इन द अपकमिंग सेशंस. ओके, next news article is Abhimanyu Mishra. Guys, a US grandmaster prodigy Abhimanyu Mishra has defeated the world champion D Gukesh. तो दोस्तों इंडिया की जो डी गुकेश हैं इनको इन्होंने हराया है अभिमन्यु मिश्रा ने, और इन्होंने कुछ नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं एंड he basically defeated him at the fight Grand Swiss in Samarkand in Uzbekistan. और इस जीत से ही became the youngest player ever to beat an incumbent world chess championship in the classical chess. तो एक incumbent world chess champion को हराया है इन्होंने in the classical chess, और ये इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों. अगर हम बात करते हैं अभिमन्यु मिश्रा की, तो ये youngest ever international masters बने थे 2019 में at the age of 10 years only, right? और इनके पास वर्ल्ड के youngest ever ग्रैंड मास्टर का भी रिकॉर्ड है. So he is an Indian origin person. Name is Abhimanyu Mishra. Please remember the name. Now I would like to ask you another questions, guys. So अभी हमने बात की फाइट की, राइट? तो फाइट वर्ल्ड कप इस साल कहां होगा? Can anybody tell me that? The fight World Cup will be taking place in our country this year in 2025, but in which state? इंडिया के कौन से स्टेट के अंदर इसको होस्ट किया जाएगा? It will be hosted in गोवा, राइट. आई होप कि आप सभी को ये डेटा याद है, राइट. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ. नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025. इट हैज बीन गिवन टू यूनुस अहमद. तो यूनुस अहमद जी को मिला है, ये एक बिजनेसमैन है और ही हैज बीन अवॉर्डेड दिस अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस एंड बिजनेस लीडरशिप. ये अवार्ड दिया जाता है बाय द अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स. तो अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ये अवार्ड दिया यूनुस अहमद को फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस एंड लीडरशिप. दैट्स ऑल दैट वी नीड टू रिटन हियर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, next part, Best Director Award. So Annapurna Roy, a filmmaker from the West Bengal, has become the first Indian to won the Best Director Award in the Horizontal section at the 82nd Venice Film Festival. So दोस्तों Venice Film Festival recently हुआ था, उसके 82nd edition. वहां पर अन्नपूर्णा रॉय जो है वेस्ट बंगाल की इंडियन फिल्म मेकर हैं, शी इज वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, और ये बनी है इंडिया की पहली पर्सन, राइट, टू विन दिस अवार्ड. इसके अलावा उनको क्यों दिया गया दोस्तों अवार्ड? शी हैज बीन कॉन्फर्ड दिस अवार्ड फॉर हर मेडन मूवी दैट इज सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज. तो यहाँ पर ये मूवी का नाम, पर्सन का नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन, एंड व्हाट इज the name of movie for which she has been awarded. All these three parts are important to be remembered from exam point of view. Next part is Kokichi Akuzawa. So guys, you will be really glad to know that Kokichi Akuzawa, this person has created a record. So guys, 102 years की age के अंदर he has basically climbed Mount Fuji. So दोस्तों Mount Fuji की अगर हम बात करते हैं, it is the tallest mountain of Japan, जिसको इन्होंने सबमिट किया है. So it is really a world record, और Guinness Book of World Record में इनका नाम शामिल किया गया है. So at the age of 102, he became the oldest person to summit Mount Fuji, guys. And Mount Fuji is the tallest mountain of Japan, right? So that's where the fitness lies. So please make sure कि आप भी
एग्जाम की तैयारी के साथ साथ अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस का पूरा ध्यान रखें. दिस इज रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम साइकिल. Okay, please remember this name as well, that is Kokichi Akuzawa. Next part is International Conference on Space 2025. तो ये कॉन्फ्रेंस रिसेंटली बैंगलोर कर्नाटका के अंदर होस्ट की गई थी विद द थीम हार्नेसिंग स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस, इनोवेशन, पॉलिसी एंड ग्रोथ. सो ये कॉन्फ्रेंस हुई, कहां पर हुई? इंडिया के अंदर हुई. कौन से स्टेट में हुई? कर्नाटका के अंदर हुई. व्हाट वाज द थीम दैट वी हैव कवर्ड? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री and Denmark was the guest country in this particular conference. So national conference or international conference on space 2025, in which state it was held? It was held in Karnataka, right? And what is the theme? Harnessing space for global progress is the theme. And guys, during this part, so many initiatives were been recalled. For example, Government of India. For example, Indian Space Research Organization is having the target that we will be having our own Bharatiya Antariksh Station. Can anybody tell me by which year India will be having its Bharatiya Antariksh Station as per the targets? तो इंडिया का जो टारगेट है, we want to have it by 2035, right? इसके अलावा we are also targeting to have an Indian astronaut on the moon. And by which year? कौन से ईयर में हमारा टारगेट है कि हम यहां पर पहुंच जाएंगे दोस्तों? So that is the year 2040. तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड रिसेंटली गाइज वी आल्सो कवर्ड द नेशनल स्पेस डे. कैन एनीबडी टेल मी ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट नेशनल स्पेस डे? इट इज बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23rd of August. तो 23rd अगस्त को हमने कवर किया था. एंड अगेन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. और ये क्यों किया जाता है सेलिब्रेट, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर. दिस इज योर होमवर्क. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर दैट ऑन विच व्हाई एग्जैक्टली वी सेलिब्रेट नेशनल स्पेस डे ऑन 23rd August, राइट? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पर, दैट इज ऑन प्रतुष. दोस्तों आप देख सकते हैं एक इमेज, राइट? सो ये है बेसिकली प्रतुष, एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको बनाया जाएगा एंड इट इज गोइंग टू बेसिकली टेल अस अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. व्हाट एग्जैक्टली इट इज? that when the first stars and the galaxies were formed in our universe, हमारे यूनिवर्स के अंदर स्टार्स और गैलेक्सीज कब फॉर्म हुई थी, कब उन्होंने पहली बार फ्लिकर किया था. सो ये सारी चीजें बताएगा प्रतुष. अब प्रतुष है तो दोस्तों एक एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म आपको याद करना बहुत जरूरी है. सो प्रतुष स्टैंड्स फॉर प्रोबिंग रीआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन से सिग्नल निकलेगा एंड यूनिवर्स की रीआयोनाइजेशन के बारे में ये पता लगाएगा. सो प्रोबिंग ऑफ रीआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन. दोस्तों रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये इनिशिएटिव है विच इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अगर हम बात करते हैं इसकी दोस्तों, लेट मी टेल यू, ये जो डिवाइस है, राइट, ये जो डिजिटल रिसीवर सिस्टम होगा, इट इज ओनली ऑफ द साइज ऑफ अ क्रेडिट कार्ड. दोस्तों आपका क्रेडिट कार्ड आप सभी बहुत लोग होंगे जो यूज करते होंगे, तो एक क्रेडिट कार्ड जो है इतने साइज का ये डिवाइस होगा जो कि लगाया जाएगा और एंड इट इज गोइंग टू प्रोब द रीआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स, राइट? सो इट इज अ प्रपोज्ड रेडियोमीटर इन द लूनर ऑर्बिट डिजाइन टू स्टडी द कॉस्मिक डॉन. दोस्तों कॉस्मिक डॉन को ये आइडेंटिफाई करेगा. व्हाट इज द कॉस्मिक डॉन? इट इज द फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन द स्टार्स एंड द गैलेक्सीज फॉर्म्ड इन आवर यूनिवर्स एंड व्हेन दे फ्लिकर्ड. सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड द कॉस्मिक डॉन. तो ये टर्म भी याद रखिए. अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस टर्म एज वेल, दैट इज कॉस्मिक डॉन. प्रतुष किसको आइडेंटिफाई करेगा, किसको प्रूव करेगा? कॉस्मिक डॉन को करेगा, राइट? आई बिलीव एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पर, दैट इज Zapad 2025. सो एक मल्टीलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज है Zapad 2025 फॉर विच इंडिया इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज. नाउ द क्वेश्चन इज वेयर एग्जैक्टली this exercise will be taking place. So this exercise will be taking place in Russia. So Russia is hosting this exercise, guys. A very important part. Indian personnel have basically went to Russia for this particular exercise. I hope this part is clear. Zapad 2025. और हमने लास्ट सेशन में 3 एक्सरसाइजेस को किया था दोस्तों कवर, और आज के सेशन में एक और एक्सरसाइज आ गई है, दैट इज Zapad. Next part is International Literacy Day. So guys, International Literacy Day we celebrate every year on 8th of September. And this year the theme of the day is promoting literacy in the digital era. So promoting literacy in the digital era is the
theme of the International Literacy Day that we celebrate every year on 8th of September. So I hope that this is very much clear. Now I would like to ask you in the chat box, please tell me that what is the theme of International Literacy Day for 2025? What is the theme? That is promoting literacy in the digital era. That is the right answer. So guys, that's all from the today's session. तो ये सारे हमारे कुछ important articles, around 16-17 articles we have covered in this session. I know that they were majorly of the general awareness part, but again, that is also important from exam point of view. Okay. So guys, now we will be moving ahead with the most important part of the session, that is solving the MCQs. Because if you are not solving the MCQ, then again, there is no point of reading and covering all these current affair articles. Because in the exam, you are supposed to answer the questions which are based on these current affair articles, and they will be in the MCQs format only, right? So here is the first question for all of you. The first question is match the following personalities with their respective countries. तो दोस्तों हमने कवर किया कि कुछ प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, कोई प्रेसिडेंट बना है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर. लेट्स सी हु विल बी गिविंग मी द राइट आंसर. So here you can see the three options are being given: जोनस गार्स्टोर, सेबेस्टियन लिकोर्नो, इरफान अली. तो ये तीन नाम दिए गए हैं और एक तरफ है तीन कंट्रीज का नाम, फ्रांस, गुयाना, नॉर्वे. ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस कौन सा पर्सन किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड है. अगर हम बात करते हैं जोनस गार्स्टोर की, सो ही इज बेसिकली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे. सेबेस्टियन लिकोर्नो बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, एंड इरफान अली हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1C, 2A and 3B. Right? 1C, 2A and 3B is the right answer. Let me see who has given me the right answer. So I can see Gururaj, Herschel, Rover, Meher, Mayank, Shanika and Akshat has given the right answer. No Napoleon, answer is not D, it is option A. Okay, बढ़ते हैं next question पे. So who became the oldest person to summit Mount Fuji? क्या है उनका नाम? और Mount Fuji is the tallest mountain of which country? These are the two dimensions across which you have to answer this question. So the Mount Fuji is basically the tallest mountain of Japan, and the name of the person who has created this record at the age of 102, that is Kokichi Akuzawa. Guys, he is really an inspiration for all of us. बढ़ते हैं अब अगले question की तरफ. So Pratush initiative of Raman Research Institute, right? So it's an autonomous institute funded by the Department of Science and Technology. आपको बताना है the acronym Pratush stands for. What exactly it stands for? Pratush. दोस्तों हमने बात की थी. It is going to probe the reionization of the universe, right? Signal कहाँ से आएगा? हाइड्रोजन से आएगा. I hope that this is going to help you out in retaining this part. What is the right answer here? That is probing reionization of the universe using signal from hydrogen. Option B is the right answer. Next question. International Literacy Day हम कौन सी डेट को बनाते हैं and what is the theme for this year? Both the questions you have to answer here in this part. What is it? So Manpreet Kaur is asking, sir, source for the current affairs. So basically you can watch these sessions where we are conducting and covering all the important current affairs, Manpreet, right? So here the question is basically on the International Literacy Day. It is celebrated every on September 8th, and this year the theme is promoting literacy in the digital era. So option B is the right answer to this question. Absolutely right. Everybody has given the option B. That's really great. And now guys, let's move on to the homework question. Now everybody who will be giving me the answer to the homework question, that person will be the star performer of our today's session, right? So the question here is on the Adi Sanskriti, and you have to identify the incorrect statements. दोस्तों कुछ लंबे लंबे statements दिए गए हैं. Normally हम देखते हैं they are the short statements, right? But आज एक लंबा statement आपके लिए मैं लेकर आया हूं, so that you are making sure कि ऐसे questions की भी practice कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? बस 3 स्टेप्स को फॉलो करना है. पहला स्टेप है आपका आइडेंटिफाई करना है सेंट्रल टॉपिक को. तो यहां पर सेंट्रल टॉपिक है आदि संस्कृति. सेकेंड थिंग इज वी हैव टू आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ क्वेश्चन. डिमांड क्या है क्वेश्चन की दोस्तों? वी नीड टू आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. एंड द थर्ड स्टेप इज टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स हियर. तो फोकस कीजिएगा कीवर्ड्स को एंड देन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. यू हैव टू आइडेंटिफाई what exactly which of the following are the incorrect statements. ठीक है, इस सेशन के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन पिछले सेशन की, तो पिछले सेशन के अंदर द क्वेश्चन वाज बेसिकली ऑन द 56th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल.
You were required to identify the correct statements. Right answer is option D. And here is the list of all the star performers from the previous session. You can see here ZDT, Nicholas, Mayank, Anmol, Sindhu, Roma, Gautam, Shubhanshu, Vishwajit, Shreyansh, Nikhil, Arnav, Abhinav, Jyoti, A170, Akashdeep, Pallavi, Harshal. All these are the star performers of our today's session, right? अगर आप चाहते हैं आपका नाम अगले सेशन के अंदर स्क्रीन पर है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गिविंग मी द आंसर इन द चैट बॉक्स in the comment section of this particular session, and you are also planning to prepare for the upcoming examinations. और दोस्तों आपको अगर हमारा सेशन आज का अच्छा लगा तो you can definitely come back to this session, but make sure that you are coming with the proper revision of the session. And from where you can revise it, you can revise it from the PDF. PDF आपको कहाँ मिलेगा सेशन का? You will be getting the PDF on the Telegram channel, जिसको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है? सो मेक श्योर कीजिए कि आप PDF को डाउनलोड करें, या फिर अगर आपको सेशन से देखना है फिर से सेशन को भी देख सकते हैं. इट्स अप टू यू. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडे सेशन, एंड आई बिलीव कि आज का सेशन आप सभी के लिए अच्छा रहा होगा दोस्तों. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है प्लीज फील फ्री टू आस्क. एंड आई बिलीव, सी गाइस, वी ऑल नो दैट योर एग्जाम इज ऑन द 18th of October, राइट? आरबीआई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, इफ्सका का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है. दोनों ही नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं. जो स्टूडेंट्स इन दोनों में से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज इंश्योर कीजिए कि विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट यू आर बेसिकली फिलिंग आउट योर फॉर्म्स. अपना फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस पहले से ही फिल कर लीजिए, सो दैट आपको लास्ट डेट का वेट ना करना पड़े, एंड यू आर जस्ट फ्रीली फोकसिंग ऑन योर प्रिपरेशन ओनली, ठीक है? वरना एक बैक साइड में आपके पास मेमोरी में रहता है कि यार फॉर्म भी भरना है, वो एक टास्क रहता ही है, राइट? कभी कभी लोग भूल भी जाते हैं. सो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करें. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिलिंग के अंदर, तो वी हैव आल्सो क्रिएटेड अ सेशन ऑफ हाउ टू फिल द फॉर्म फॉर बोथ दीज नोटिफिकेशंस, सो दैट आप उसको इजीली फॉर्म को फिल कर सकें, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अपार्ट फ्रॉम द सेशन आर्टिकल्स कोई और डाउट है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कोई और चीज आप फेस कर रहे हैं दोस्तों, डो नॉट वरी अबाउट इट. वी आर हियर फॉर ऑल ऑफ यू. वी हैव गॉट योर बैक. व्हाट यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू डू इज जस्ट मेक श्योर यू आर शेयरिंग योर कंसर्न एट hello@edutap.co.in, और आप हमारी टीम को भी कॉल कर सकते हैं at 8146207241, राइट? एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज, and we are going to support you in your upcoming journey of becoming the next officer this year. So my dear friends, I believe that everything is clear to everyone. I can see in the chat box that not a single doubt is here. So I can see that yes, all your doubts have been clear. So one of the student has also given me the answer to the homework question. That's really good. Now all of you are also required to answer the question in the comment section, क्योंकि जितनी ज्यादा आप questions की practice करेंगे, you will try to answer this question, then again it is going to be helpful for you only, right? So guys, now I will be meeting you in the next session. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.